हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ तालुकात सीरीज। हमने खुद भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हम नई एपिसोड के साथ आ जाएंगे, बट सिंस द अपॉर्चुनिटी केम अप सो वी आर नॉट गोइंग टू लूज इट। और इसमें आई एम वेरी इंटरेस्टेड, जो आज का टॉपिक है इज समवट पर्सनल टू मी एज वेल, क्योंकि हमने थोड़ा रिसेंटली मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। बट बिफोर आई गेट इन, आई वुड लाइक टू वेलकम फातिमा एंड अनुष्का टू टुडेज एपिसोड। सो वेलकम। Thank you. Hello. So starting with Fatmah, she's an integrative counselor and she has a master's degree in counseling from UK, and she aims to offer a safe, non-judgmental, confidential space where individuals can explore their concerns, feelings, past and present experiences and relationships with themselves. And I remember we talked about it in our last episode as well. Anushka is a relational counselor based in Lahore, and she has a background in fitness, nutrition, clinical psychology. So आज का जो topic है वो क्या है? So the topic is फॉर न्यू मदर्स। हम लोग देखते आए हैं कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल उनकी नीड्स होती हैं। इसके अलावा वो बहुत से डिफरेंट चैलेंजेस गुजरते हैं, क्योंकि इट इज आई बिलीव अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन हु गोस थ्रू इट। सो इसके हवाले से ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हम आगे बात करेंगे। सपोर्ट ग्रुप क्या होता है, क्या ऑफर हो रहा है। बट बिफोर दैट आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। और उसमें पहला क्वेश्चन मेरा हुआ कि हम सबको जनरली एक आइडिया है, पता है, मे बी हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस भी है इसके हवाले से, बट इफ यू कुड लिस्ट डाउन व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ न्यू मदरहुड, और उसके साइको इमोशनल फिजिकल जो आपके चेंजेस या चैलेंजेस होते हैं उसके हवाले से अगर आप लोग बात कर सकें। So I have a 3-year-old now, and I think I'm still, going through those changes. Sorry, this is not helping me. This is scaring me more, so I'm sorry. Well, it's the truth, right? Like you said, physical. So physical is a big part of it too. Just before this, I was talking to Fatmah about this, that even now, sometimes when I look at myself, I'm like, okay, this is me now. This is what my body looks like. And besides that, I think because of the outward changes, there's a big change in identity also, right? No matter how prepared you are, no matter how knowingly you decide to venture into this, building a family, there's a big change in identity. From the moment, actually, I would say it's not birth, it's the moment of conception that you become a mother, right? Everything you eat, everything you drink, your routine, your sleep schedule, everything is around another living thing. It's a big responsibility. And I think that with that new role and all of these changes, I think there's that also sense of loss जो पहले था, और it's irreversible hopefully, right? तो एक change जो आपकी जिंदगी में motherhood से या parenthood से आती है, it's there and hopefully it stays forever, right? Once you become a parent or a mother, you stay a parent for the rest of your life. It's a role that's there forever. I mean, right now when Fatmah was speaking, I was thinking if we were to ask, सबसे मुश्किल bit कौन सा है? You'd say कि भी पहले 1.5 साल बड़े मुश्किल हैं, and then somebody with a teenage child would be like, oh, try and raise a teenager. So exactly what you're saying, there's a constant loss with every sort of milestone, and there's a constant change. And if we're doing it right, hopefully we can change with the needs as well, right? But there is a struggle of the boundaries, what part of you let go of to accommodate this new being with their personality traits, their demands. So it's and I it's a big think thing. Other than physical changes, I think environmentally or socially भी also changes आती हैं कि your routine is not the same, your schedule is not the same, social structure में इस तरह से change आता है कि जिस तरह पहले अपने दोस्तों से या कजिन से या फैमिली में जब दिल किया उठ के चले गए, अब आपकी रूटीन वो नहीं है, अब आपका स्केड्यूल वो नहीं है, और आपका स्केड्यूल अब एक छोटे से इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, और वो स्केड्यूल भी आपने खुद बनाया है, उसने नहीं बनाया, राइट? सो बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और क्योंकि हर कोई इससे, ज्यादातर लोग इस चेंज से गुजरते हैं, इसके बारे में बात नहीं होती क्योंकि इट्स नॉर्मल, राइट? लेकिन ये कितनी बड़ी चेंज है, शायद उसको रिकग्नाइज करने की बहुत जरूरत है। और जो उसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं या जो स्ट्रगल्स, सफरिंग आती है, उसके बारे में बात नहीं होती, बिकॉज यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, राइट? इट्स अ ब्यूटिफुल चेंज, बट इट कम्स विद कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस आई थिंक फेस करने पड़ते हैं इस चेंज की वजह से, जिसके लिए सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत एक
डोंट टॉक अबाउट इट वाला कल्चर है हमारा कि एक अगर किसी अच्छी चीज से कोई बुरी चीज आ रही है तो उसको ब्रश असाइड करने का एक ट्रेंड है. Yeah, also like ये हमने भी किया, आपकी अम्मी ने भी किया, आपकी दादी ने भी किया, आपके सबने ही तो किया है, ये ऐसे ही तो अगर सबने किया है तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो नॉर्मल चीज, like but actually सब कर लेते हैं, but you kind of just hit the ground running. There's no handbook now. Thankfully, there are lots of books, and I'm grateful for. I bought a lot, but really in our culture, there's no such handbook that's like, this will happen to you. This will. Some people do, there is that it takes a village, and some people have a village. But more and more, I feel like, especially in the last 2-3 years, the world has changed so much. There is no handbook for COVID time, what it's like raising a child. Children that were born in COVID, children that were supposed to be going to school when COVID hit. That's something new. Nobody had a toolbox for that. I think we're still trying to figure it out. Yeah. Sorry, एक बात जो आपकी की थी, I totally agree. Going a bit back, वो ये थी कि it's not something that is going away. It's not something, you go on an adventure, you come back and then you're going back into routine. So मैंने जब किया तो शुरू में it might have been a little different, but अब मेरी approach शायद ये हो गई है कि यार ये ऐसे है, different age के साथ different challenges होंगे. कभी आपको फर्क पड़ा होगा उसने क्या पढ़ना है, कभी जो है वो क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना, क्या बनना है, क्या नहीं बनना. So it's here to stay. और the better you adjust it, the sooner you adjust, the better. Secondly, एक हम बात कर रहे थे इसमें, जिसने आपने बात की थी, कंसेप्शन से बात स्टार्ट कर रहे थे, इमोशनल चेंजेस की अगर आप लोग उसको ड्रेस कर सको. क्योंकि एक तो ये है कि ठीक है हम मुस्तकिल तौर पे, और आप फातिमा बात करते हैं स्केड्यूल हम डिसाइड करते हैं. नो, स्केड्यूल एक्चुअली वही डिसाइड करते हैं, हमें सिर्फ फॉलो करना पड़ता है. We can't do anything about it. आज जो है वो पब्लिक हॉलीडे थी. प्लान ये था कि सोएंगे, सुबह 6:30 बजे बच्ची उठ के बैठ गई और उसने कहा मैंने 10 बजे तक नहीं सोना. So from 6:30 to 10 we were up and watching Cocomelon and eating and having a party on a public holiday. So schedule खुद सेट करते हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है. And also like that's also such a big thing, right? कि आपका schedule change हो रहा है. That's like, I feel like the biggest loss of control, that you can't decide when you will sleep. You can't decide when you will wake up. You can't decide when you will eat, when you'll go to the bathroom. Yeah. How long you can be in that bathroom. True. Because कभी कभार तो दरवाजा टूट रहा होता है कि बस. So yeah, I think that emotional ties into it. I feel like there's so many things that anchor our emotional and mental health that seem like not such a big deal, like when we wake up, when we sleep, when we can meet our friends, and that all changes. So I think the emotional roller coaster starts with the hormones, but it then just never ends because there's like constant emotional demands. And I think that I was discussing this before, that वो जो एक containment और emotional regulation जो है ना, वो I feel like मेरी therapy training भी तो मुझे मिली है, but उसका test जो है वो after becoming a mom tha, because there's some things that will really trigger you, that will really just push those buttons, and you just learn to sort of breathe through it and just calm yourself down, So I think that there's obviously, like you said, there's physical responsibilities, there's financial responsibilities, but that emotional responsibility to be regulated and to regulate another and to sort of help them regulate and teach them, my child is now 3. So now we're using like emotion words, So it's really funny, but I'll ask you, are you happy? Are you sad? And aage se jawab milega, I'm happy, but I'm a little frustrated also. And I'm like, but I'm glad कि वो बोलना तो शुरू किया, because in the first year of life, you're just sort of guessing. भूख लगी है, नींद आई है, pamper change करना है. So in some ways that part has gotten easier, but then it's also more emotionally demanding as they grow older because their emotional needs are expanding. And I think इससे एक challenge जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि एक हर किसी की एक expectation होती है for the mother to know. क्यों रो रहा है, क्यों सो रहा है, क्यों नहीं खाना खा रहा, right? अम्मी को भी नहीं पता, she is also struggling. खास तौर पे अगर पहली दफा कोई एक खातून अगर माँ बनी है तो वो भी पहली दफा माँ बनी है, like उनको नहीं पता कि ये छोटी सी चीज क्यों रो रही है, या ये something that looks so small is not so small when it comes to emotional, right? तो और I think वो भी एक challenge है, but I think emotional challenges से जो एक, क्योंकि हम support group के बारे में बात कर रहे हैं, तो I think postpartum anxiety और postpartum
postpartum depression जो है, that's something that motivated us to do this because उसकी recognition भी कम है, उसके बारे में बात भी कम की जाती है और उससे associated guilt और shame बहुत ज़्यादा है कि आप माँ बनी है तो why are you depressed? This is the happiest thing that could happen to you, right? तो उस एरिया में सपोर्ट बहुत कम है क्योंकि एक तो बहुत साइलेंस्ड है टॉपिक और अगर कोई महसूस करता है पोस्टपार्टम एंजाइटी या डिप्रेशन तो वो अपने हद तक रखते हैं। आई थिंक देयर आर वुमेन जो अपने पार्टनर को भी शायद नहीं बता सकती कि मैं ठीक नहीं हूँ, राइट? सो डू यू वांट टू से मोर अबाउट दैट? I think it would be, sorry, as a layman, I would request कि आप लोग इसको डिस्कस करो कि how would you define that? What are some of the, it's not say कि मेरी podcast सुन के कोई अपने आप को identify कर लेगा, but some of the symptoms, some of the things that you could identify, this is PTSD है या ये मेरे यहाँ मुझे help की जरूरत है या these are the things I should look for. The interesting thing, and I think that is the challenge with this postpartum blues, which almost everyone, it's just sort of a come down of the hormones as well, right? After you give birth. And postpartum depression is a lot more serious, but it's just so different. There's so many different feelings. And I feel like when you talk about the guilt and shame, that is part of it also. I feel like it's such a spectrum of emotions. It'll be depressive, but I think because there's another life that's dependent on you, there is like this pressure, a constant pressure to be on top of it, right? Like when a child is 2-3 months, they need to be fed or changed or put to sleep almost every 5-10 minutes kuch ho raha hota hai. Yeah. And it's so exhausting and so tiring that if you don't have support, that can also be one of the causing factors of postpartum depression, and I was talking about postpartum anxiety and I didn't even realize that I had some anxiety postpartum. It just felt normal, right? Because there's another life that I'm responsible for. So obviously I'm waking up in the middle of the night and checking if the baby is okay, and I'm waking up in the middle of the night checking कि time तो नहीं हो गया कि इसको feed देनी है या pamper change करना है, So it is such a wide range of symptoms, and I think I'm just glad that at least postpartum depression, I feel like there's a lot more awareness, there's a lot more material, there's a lot more support than with postpartum anxiety. I didn't know about it. I only learned about it after I gave birth and after I think maybe my child was maybe 3-4 months that I was like, okay, hey, maybe now this is something else. This is not just the child. This is something coming from me that even when the baby is okay or seemingly happy, I can't relax. I can't, sleep for longer than a certain amount of time. Mm-hmm. So I think there's just so many little hints that something is not okay. But postpartum depression can get very, very bad, right? I think in the media and in movies, आप एक बहुत extreme case देखते हैं. And so people, it goes undiagnosed because they're like, okay, no, my child is okay. नहीं, I'm all right. I can care. मैं pamper तो change कर रही हूँ. मैं ये तो कर रही हूँ. And it goes unseen. Minimize भी किए जाते हैं ये features के ये खाली आज महसूस हो रहा है, कल ठीक हो जाएगा. एक वो भी होता है कि तो कुछ आपने फीचर्स के बारे में आई थिंक बात की थी कि क्या कुछ साइंस या कुछ उनके पीछे सो आई थिंक एक सेंस ऑफ आइसोलेशन बहुत स्ट्रांग होती है, गिल्ट शेम की फीलिंग्स होती हैं, लॉस ऑफ प्लेजर होता है, इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया जिसमें नींद आपकी एक तो बच्चे के स्केड्यूल की वजह से खराब हुई भी होती है, लेकिन उसका अगर वो सो रहा है और आपको फिर भी नींद नहीं आ रही या अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया है, उसकी एक उसमें यू हैव टू बी केयरफुल देयर बिकॉज आपके पास आप बच्चे के साथ इतना प्री ऑक्यूपाइड है कि आपको खाने का टाइम नहीं मिला या आपकी भूख मर गई है, राइट? तो जिस तरह से अनुष्का ने कहा कि हर इंसान के लिए इट विल लुक डिफरेंट, राइट? तो लेकिन ये कुछ साइंस हैं, कुछ फीचर्स हैं इसके जो अगर इफ यू लुक एट इट और अगर वो कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट हैं तो फिर इट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली. एंड when I say seriously, I mean ke seek support, get support. First step is that, and then there is therapy, there is doctor and जो भी आपकी physician है आप उनके पास भी जा सकते हैं अपनी ये चीजें लेके. लेकिन पहला step होगा खुद recognize करना, और जो आपके इर्द गिर्द then again हर किसी के इर्द गिर्द support नहीं है,
कुछ लोगों के इर्द गिर्द बाकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है और कुछ लोगों के लिए ये मदरहुड का एक्सपीरियंस बहुत आइसोलेटिंग होता है। हर कोई अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, हर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहता। बहुत सारे लोग जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से दूसरे शहरों में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, राइट। तो वो उनके लिए, और खास तौर पे जो दूसरे मुल्कों में लोग रहते हैं, हम जिस तरह हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बच्चों को बड़ा किया जाता है, बाहर का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, तो एक वो कल्चरल एस्पेक्ट, वो लेयर भी आ जाती है आइसोलेशन में। Yeah, and you know, when you say loss of pleasure, I think that's a really big one, right? Because a lot of the times you hear moms like, "Hey, I'm not enjoying," even when the child is laughing or playing, but I'm not feeling that connection. So there's this sort of loss of connection with the child. There's a lack of attunement. There's a numbing, you know. And the reason I want to be careful is because, is that burnout. It could also just be burnout, right? So if it's like there's a lack of support, you're responsible for the child. You know, Fatmah, you were saying कि बच्चा सो गया लेकिन आप सो नहीं सक रहे. वो थोड़ी हंसी आ रही थी because I was like, you know, that's one mashrafa, that advice that people say, कि sleep when the child sleeps. Yeah. And it's like, how can I sleep when the child? Yeah. You know, so there's a part of normalcy, and then there's something that sort of crosses over, and you're like, okay, this is not all right. Like this feeling is not going away. So it's not just burnout. You know, you've taken a break, you've sought support. You've gotten 2 or 3 days where somebody else is sort of the primary caregiver, and you're still not doing okay. You're still not being able to feel all right. Then, you know, there's something is up. And that's why I mentioned postpartum blues also, because postpartum blues are quite normal. I feel everybody has them. And I think there's a time aspect. When it goes on for too long, you know that it's potentially, maybe you need a diagnosis, maybe you need intervention, maybe just support is not helping, but you need to go to a psychiatrist or you need to go to a therapist. So, और ये जो भी पूरी आपने बात बताई है कि इवन के यू नो मजा नहीं आ रहा, राइट, ये या प्लेजर नहीं किसी भी चीज से आ रहा, आई थिंक कि आपने कितने आराम से ये बात कर दी, लेकिन अगर हम इस सेटिंग से बाहर जाएं तो फॉर अ लॉट ऑफ मदर्स इवन दिस वन स्टेटमेंट दे कांट से दिस आउट लाउड. Very difficult. You know, you can't, there's just they can think it and they might feel guilty and they might feel ashamed, and वो cycle उनके अंदर ही रह जाएगा. So इस support group का मकसद है इस तरह की चीजों के बारे में बात करना and judgment के बगैर बात करना कि yes, this is normal to feel like you're not okay or you're not enjoying something that you're. I think another point I want to acknowledge is वो probably जो working moms हैं उनके लिए आई थिंक एक और लेयर भी ऐड हो जाती है, जहाँ पे अगर वो ज्यादा एक्सटेंडेड ब्रेक पे जा रहे हैं तो उनको अपना करियर या अपना वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको मिलती काम से वो नहीं मिल रही. अगर ऑब्वियसली आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एक और लेयर ऐड हो जाती है जिसमें यू आर देयर बट यू कांट कंसंट्रेट. सो जस्ट टू एक्नॉलेज देम एज वेल कि उनके लिए एक और 2 लेयर्स ऐड हो जाती हैं, जिसमें उनको अपना करियर भी बनाना है, फाइनेंशियल भी इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग, और ऑब्वियसली बच्चे का सोचते हैं हर कोई आगे. So I think वो एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जहाँ पे your sense of achievement that was coming from work is not there at times, कि जो आपको शायद वहां से अपनी एक सेल्फ अचीवमेंट सेल्फ रिकग्निशन मिल रही थी वो एस्पेक्ट भी फॉर द टाइमिंग साइड पे हो जाता है, और इफ यू आर देयर तो फिर आपको परेशानी रहती है if you don't have a support system. So talking about support systems, क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे आप लोग एड्रेस करना चाहते हैं इस इशू को? You want to go first? So we thought of this support group. When I had my child, I looked everywhere for a support group, you know, and I couldn't believe कि है ही नहीं कोई. There was no support group that I found apart from the Facebook groups, you know, and Facebook groups are बहुत support है. There's a lot of mommy groups, but you know, I wanted something that was like therapy almost, where it's like I know इस time पे ये लोग मुझे मिलेंगे और ये feeling मुझे आएगी और ये, you know. So I was lucky to have 3-4 friends that had children like 1-2 हफ्ते आगे पीछे. And if it wasn't for those late night WhatsApp messages when I'm like just about to give up and think I can't do this anymore, and I get a message like, oh my God, today was really tough. I mean, I'm so done. Like, I don't know how I'm going to do this tomorrow. I feel like just that sense of like, I'm not alone. I'm not the only one feeling this, because every mom feels guilty, whether she's working or she's not working, she feels guilty. Every mother feels like, I don't think I can do this. I don't think I'm good enough. Every mom feels like I need more support. I wish I had more support, you know, and
I think just knowing that is such a big source of तसल्ली. I mean English क्या, but वो एक थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है कि अच्छा मैं एक और दिन कर सकती हूँ, मैं एक और महीना कर सकती हूँ, मैं I feel like my support group, it's informal, but I think my support group has carried me all the way till my child's first month, because that was another sort of separation anxiety and all that. So I feel like the aim for this support group is to give moms a space they deserve. It's a confidential, safe, boundary, predictable place. You're going to come here and this is what you're going to get. It's non-judgmental. It's not going to leave the room. So I feel like a lot of the times, when you're with your friends, you can't, you meet your friends, but you can't take up that space all the time. You can't only just be talking about how tough your life is, So I feel like at least there will be a certain goal. There will be a common goal and a common aim. And everybody, so the support group we're doing is for moms that have children that are in the first 2 or 3 years of their life. So wo milestones be same hai, wo challenges be similar hai, and the aim is ke ek jagah jahan par you can be seen, you can speak freely, and that mom guilt and that shame that jo kabhi kabar dimag mein hi ghoom raha hota hai, wo bahar nikal aaye. Because sometimes when we say something out loud, it really loses that power and weight. It feels like it's going to sound so bad and it's going to be such a big deal. But once it's out, you're just like, okay, it's better out than in, And I think that's the aim. Fatmah, you want to add anything? No, I think you've covered that. Clearly, I feel very passionately about this. Yeah. So I think कुछ हद तक आपने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड हैव बीन वही कि अच्छा जी जिस तरह बात करते यू हैड अ इनफॉर्म्ड व्हाट्सएप ग्रुप, यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, वी ऑल स्टिल डू दैट. आई पर्सनली डू दैट. आई हैव कपल ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो क्लास 7 के दोस्त और हमारे बच्चों में कुछ 6-8 महीने का फर्क है जिस तरह आप बता रहे हैं. तो वो हम लोग एज अ डैड और वो जो एज अ फादर हम लोग अपने एक चल रहा होता है, मिलते हैं साइड लाइन्स पर, हम लोग गपशप करते हैं. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि आई रिसेंटली ज्वाइन दैट ग्रुप. बट उसमें एक दोस्त होते हैं और अगेन जिस तरह बात करें एक इनफॉर्मल सपोर्ट होती है, एक आपकी गपशप होती है. दे ऑल्सो नो एंड एट टाइम्स समटाइम्स दे ऑलरेडी नो कि आपको क्या सुनना है. सो आपके दोस्त फिर वही सुना रहे होते हैं जो आप सुनना चाहते भी हैं. सो लेकिन इस स्पोर्ट्स ग्रुप में क्या डिफरेंस होगा देन जस्ट अ गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स, अदर देन दैट कि ऑब्वियसली आपने सेफ स्पेस की बात की, बाउंड्रीज होंगी. But how would you define that there's a boundary between talking to friends and talking to a potential group of strangers as well? So इसका I think number 1 वही होगा कि ये एक तो structured है in a way कि ये महीने में 2 दफा होगा, ये टाइम है 2 घंटे के लिए मिल रहे हैं और एजेंडा के साथ मिल रहे हैं कि मदरहुड के बारे में बात होगी, मदरहुड से रिलेटेड चीजों के बारे में बात होगी, जो चीजें आपकी जिंदगी में हो रही हैं. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, तो एट द एंड ऑफ द डे उसको रिलेशन बनाया जाएगा मदरहुड के साथ, राइट? एंड आई थिंक दैट्स वेयर अनुष्का एंड आई वी बोथ कम इन कि हम दोनों, शी इज अ थेरेपिस्ट एंड अ मदर एंड आई एम अ थेरेपिस्ट हु इज नॉट अ मदर, राइट? सो हम अपना थेरेप्यूटिक नॉलेज भी इसमें शेयर करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो एज थेरेपिस्ट हम इस ग्रुप में करेंगे, जो जिस तरह से वो हम उनको बताएंगे, कुछ थेरेप्यूटिक नॉलेज, कुछ स्किल्स, अगर कुछ इंटरवेंशंस, हेल्पफुल इंटरवेंशंस, यूजफुल, नॉट कि वो अब ये कर लें, कोपिंग के कुछ तरीके, कुछ रेगुलेशन के तरीके, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, इस तरह की चीजें हम वहां पे शेयर करेंगे. कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ बिग पार्ट ऑफ दिस. आप अगर अपने दोस्त को कोई बात बताते हैं तो आपके जहन में कहीं ना कहीं ये होगी कि ये ऐसी मैं बात बताऊं कि ये आगे अगर जाए तो इट्स सेफ, राइट? तो इस ग्रुप में कॉन्फिडेंशियलिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगर वो ब्रीच होगा तो some action will be taken. So whatever we talk about, it will stay within the group, जो कि बहुत बड़ी वो चीज है. और once you leave the group, then it stays there, right? So it's you might not even bump into the therapists outside or whatever, right? So एक वो एक containment और एक holding वाला एक वो है कि यहाँ पे बात हुई और फिर आप उस बात को वहीं छोड़ के चले गए, right? तो एक ये I think support group दोस्तों से जिस तरह जो एक डिफरेंट है वो ये है कि do you want to add something to that? Yeah,
So also when we were deciding the group, it's going to be a support group, but we did decide that we'll have a bit of an agenda for each sort of meeting. So we'll have some prompts. There's like a few things that after, like not only discussing with other mothers, but in our readings, in our trainings, in my own experience as well, that we discuss that, ye 2-3 topics hai that we want to prompt and that we want to explore, that we want to talk about. So that, like she said, there's some teachings also. There is some take home that will translate into a healthier child, a healthy mother-child relation, mentally, emotionally. There's some take home from it, I would say. So little things like identifying your triggers, identifying के boundaries कहाँ पे lag हो रही हैं, कहाँ पे बन सकती हैं, even identifying कि इस relationship में या इस जगह पे boundary में नहीं रख सकती, right? So sometimes identifying these things जो कि आपके जहन में शायद होती हैं लेकिन बाहर नहीं निकलती, और जब group के साथ share होंगी तो ये भी एक I think बहुत important हिस्सा होगा कि अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ जो इस चीज के साथ struggle कर रही है, ये भी कर रही हैं, right? और दोस्तों के साथ अक्सर ये होता है कि you go in thinking कि आज मैं XYZ के बारे में बात करूंगी और they are already having a day, then you are like अच्छा मैं नहीं करती अपनी बात, right? So इस ग्रुप में वो नहीं होगा, हर किसी की स्पेस होगी, शेयर्ड स्पेस होगी जहां खुल के बात हो सकती है अपने concerns, feelings, experiences, challenges, struggles के बारे में. And I feel that confidentiality, like you can't downplay it. I think when we know we're going into a space that's going to be confidential and it's not going to follow us out, there's a lot we end up saying. Even if you think about therapy, I don't think people they plan to say one thing, but you come in and you just realize that you really need to get something else out there and you need to leave it there. You don't want it spilling over into your other life. You don't want to meet with this tomorrow at work or at a family dinner. You don't want to hear about it again. So I feel like confidentiality is a very, very big part of it. And like I said, I was grateful for my friends group, but I still had my therapeutic space, and I think that there can be some overlap, but they both are different and there's a need for both. Also, when you walk into this support group, when you walk into the room, तो सबको पता होगा कि ये shared experience है. यहाँ पे सब of course हर किसी का experience unique होता है, different होता है, लेकिन एक को being a mother and knowing कि मुझे भी support चाहिए और इनको भी support चाहिए, that I think is it might be a very empowering experience and very holding. That's what I think as an outsider. Not well outside of motherhood, but I think that when we were talking about the support group, we've been parts of like group therapy and support groups, and what a group can offer, like that kind of validation and to be witnessed in a group, I think it's transformative. वो आपको one-on-one therapy में या अगर आप 2-3 दोस्तों से बात कर रहे हो ना, it's not the same experience as you have when you meet a group of strangers and you're accepted as you are. I think that is phenomenal. And I think for mothers also, that unconditional acceptance, free of judgment, a space where they can really just talk about the guilt, talk about the shame, talk about the not so lovely, beautiful, flowery things of motherhood, and not be shamed or not be judged and not be shunned for it. I think that can do wonders. And I think talking about those bits will make space for the lovely, flowery bits. Yeah. राइट क्योंकि जो अच्छे पार्ट्स हैं क्योंकि वो इतनी एनर्जी जा रही है एक बैड पार्ट को सप्रेस करने में कि वो अच्छी चीज अगर हो भी रही है तो शायद उस तरह से महसूस नहीं होती होगी सो आई थिंक कि अगर वो एक जो चीज सप्रेस होने में इतनी एनर्जी लग गई है वंस दैट्स आउट ऑफ द सिस्टम आई थिंक कि वो इट विल मेक स्पेस फॉर द गुड बिट्स नहीं आई एग्री बिकॉज इनिशियली जो है वो क्योंकि एकदम आपके लिए भी नया एक्सपीरियंस होता है I nothing to brag about it but I try to be an involved father that means कि फिर आप उठ भी रहे हैं सुला भी रहे हैं चेंज सब कुछ वगैरह so initially मुझे यही था कि यार मतलब too much is happening and everyone is overwhelmed and obviously mother का रोल तो बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा उनके responsibilities भी होती हैं तो at a point I realized कि I've stopped enjoying those first moments कि अच्छा यार वो पहली तो बच्ची हंसी है या की है क्योंकि हम इतने ज्यादा अपने उसमें खपे जिसे उर्दू में कहते हैं खप चुका था उन चीजों के अंदर कि यार ये हो रहा है फिर आई रियलाइज कि नहीं यार दिस इज नॉट इट एवरीथिंग असाइड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर फर्स्ट टाइम अगेन ऑब्वियसली वो बच्ची अब
सारी उम्र हंसेगी, भागेगी, खेलेगी, but the first step, the first laugh, the first thing. So yeah, I totally agree, Fatma, कि at times आप उसमें इतने overwhelmed हो जाते हैं कि आप उन moments को enjoy करना छोड़ देते हैं, and then you realize when those moments have passed. So before we wrap up, how people can get in touch with you guys? कैसे join कर सकते हैं? कब आप लोग start कर रहे हैं? And the details. You should go over there. Always, क्या किसको कौन से links follow कर सकते हैं so they can stay updated जो भी आप लोग plan कर रहे हैं? So 2 pages हैं Instagram पे, एक तो The Safe Space है और उसके अलावा The Shared Couch है, जिसको Instagram पे आप कर सकते हैं और उसके ऊपर हमारी contact details हैं. Yeah, so you can WhatsApp either one of us. We're doing like a short interview just to make sure that the group is a little similar. Right. So anybody who reaches out, we just do a quick phone call or like a WhatsApp conversation, and it's myself and Fatma. And I think WhatsApp is enough, or yeah, you can always message on Instagram on these 2 accounts. Right. And we are starting this week or next week. We're just finalizing the details. Okay, so हम लोग जो link है वो दोनों मैं description में add कर देता हूँ, so people can keep on following the pages, and whenever you announce, so they can chip in. Any last words of wisdom for this session? जो और as I say, कौम के नाम कोई अहम पैगाम आप मज़ीद देना चाहें? Yeah, I think we should, हम दोनों बहुत passionate हैं इस project को लेके, और हमने तकरीबन 1 साल इसके बारे में conversations की, इसके बारे में हमने meetings की, and we really want to do this for people. It's not just for us, but we really think that mothers वो society का बहुत important, सबसे important हिस्सा है. They give birth, right? उनकी वजह से पूरा निज़ाम चल रहा है और उनको support की सबसे वो बहुत deserve करती हैं, right? So we're very passionate about it, and we really want to offer this to the universe. Yeah. I couldn't have put it better myself. Yeah. Sounds good. And personally, I would definitely recommend and vouch for this project because, again, जिस तरह में बात की है, this is something that is less talked about. और जिस तरह हम शुरू में अनुष्का बात भी कर रही थी कि ये it's more like यार सारी दुनिया करती आई है और ऐसे ही होता है, तो तुम भी ऐसे करो. मैं इस लॉजिक से जो खिलाफ इसलिए हूँ कि अगर एक चीज गलत होती आ रही है 100 साल से, तो आपने उसको अगले 100 साल गलत क्यों करना है? If you have the understanding, chance, resources to change anything, you should. So हमेशा से ऐसा होता है is not always the right logic. So आज के एपिसोड को रैप अप करते हैं. जो डिटेल्स हैं, जो लिंक्स हैं रेलेवेंट, और इनके नंबर, लिंक्स आपको इंस्टाग्राम अकाउंट वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ यू वांट टू रीच देम विया सुखन, तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. we'll connect you guys. But once again, thank you so much for joining and all the very best for that project. Or Sukhan or personal capacity में, if I can be of any help, so please let me know. Thank you, Amar. Thank you so much. It's so kind of you. Okay, thank you. Until next time, Khuda Hafiz.